अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज हम मौजूद हैं लॉरियर यूनिवर्सिटी के वाटरलू कैंपस में, जहां ओपन हाउस 2026 का ज़बरदस्त इवेंट हो रहा है। अगर आप कनाडा में यूनिवर्सिटी एडमिशन के बारे में सोच रहे हैं, ख़ास तौर पर बिज़नेस, साइंस, आर्ट्स या कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम्स में, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप एंड तक हमारे साथ जुड़े रहें और आपको इंशाल्लाह सारी डिटेल्स यहाँ मिलेगी। आज हम सारे कैंपस का भी टूर करेंगे और रेजिडेंस भी देखेंगे। तो चलें आए, सबसे पहले हम लोग कुछ ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं, तो वहाँ चलते हैं। यहाँ से Don't recommend it. We have a guarantee for residents. So for your first year, you have, as long as you apply by that deadline, the guarantee that you will have a spot in residence. We'll go over kind of the things related to styles of residence in just a couple slides, but as long as you apply by that deadline, you are 100% guaranteed a bed in residence and paid deposit. So do those things, and you're good to go. The other thing is just with accommodations. You'll just want to make sure you fill that out on the application. And then there will just be a couple of things to fill out for your application forms and documentation. So for room assignments, like I said, it is lottery based. So you will rank your top 2 styles of residence choice. I'll go over the different styles in just a second. And then the placements will depend on how many students apply for those styles, how many beds we have available, things like that. There is often a higher demand for the single rooms, so if you do rank that as your top choice, not 100% guaranteed that you will get it, but they always try to do their best to give your first or second preference. And you can also request to live with a roommate. So you can only do that with one roommate, but again, I'll go over that in just one more slide. Other thing to note about the application is just the department's recognition of gender identity. So when you do apply for residence, our department recognizes self-identified gender, not your assigned birth gender. So just one other thing for you to look for on our application. Okay, so here are our residence styles. So we offer dormitory, apartment, both traditional, semi-private for dormitory, and then I'm not gonna read out all these numbers, but prices for residence does vary based on the style. There is a plus or minus difference of a couple $100 depending on which style you are applying for and which style you are living in. So all of this information can be found on our residence website. These are for apartment styles, and then these are for dorm styles. All of this information as well can be found at our booth, so it does vary based on which style you are living in. I see a couple phones out, so we'll give a second if you guys want to take a photo. All right, roommate request. So if you are coming to Laurier, maybe you have a friend that you've applied with, you want to live in residence with them, you can, when you apply for residence, request a roommate. You can do this with one person. You cannot do it if you were applying for single dorm or semi-private room, and both of your rankings have to match. So on the application, you'll receive kind of like a roommate. It's a personalized code. So you and your friend must put in each other's code to get that matched up. So as long as you guys like kind of abide by those rules, I guess, on the application, you guys will be paired up and hopefully be able to live together. Again, any questions, additional clarification, please let me know afterwards. For room assignments, I know it's a little ways away, but you will receive your residence assignment by that first week of August, and it will be through your My Laurier email. So like Heather said, make sure you've got that all up and activated so you know where you'll be living. And if you have any questions, obviously we're not on the Frankfurt campus right now, so if you have any questions, reach out to housing@wlu.ca. And the other thing to note is just with our Freedom of Information and Privacy Protection Act, only the student can contact the Department of Residence. So if we have any parents or supporters in the room, it does have to be through that student's name and email for them to reach out to the department and get any information regarding their application. Okay, meal plans. So part of living in residence also includes that meal plan. Any student living in residence is required to purchase a meal plan. So we offer, I guess, 3 different kinds. If you live in dorm style, you have the option to choose between a 5 or 7-day all-access meal plan, which is kind of that all-access to the dining hall, between the dining hall set hours. With our apartment style, the apartment style meal plan is typically made up of only flex dollars, which is our on-campus currency that you can use to buy food at some of our different retail locations, and you can use the flex dollars at the dining hall. So again, these also vary in price. They also vary in kind of what's offered with them. All of that information, again, can be found at our website
or we've got Elizabeth in the atrium. But any questions about meal plans, you can also direct them to the One Card office, or you can direct them to food services. All right, another quick few things to go over is just with some of the supports available in residence. So we have student staff that live in each of our buildings. We've got residence life dons, which are upper year students who are kind of live-in mentors for you as you start your transition into first year into residence living on campus. And they're there to kind of help you with anything, navigating all of those different changes and navigating the campus, navigating classes, things like that. So they can offer you one-on-one support, and you then live amongst a community that is supportive and helpful and there to see you succeed. So yeah, Dons are there to focus on that community building aspect and with security. So we have Dons on duty every night. We're there to make sure everyone is safe and secure and provide any support that is needed. But then we also have residence education advisors, which is a job that I've done for the last 2 years. So I'm a little biased, I love it. And they're there to help connect students to on-campus supports. So if you ever have any maybe issues that you're dealing with, or you just don't really know where to go for specific support, you can connect with your REA, and they can help connect you to any resources. And they also help with delivering different things to help students transition, like workshops and events and things to help grow your skills in things like time management, healthy eating. As I said, we've got Elizabeth out in the atrium if you want to chat with her, if you have any questions. I'll be back out there in a few minutes with her. But yeah, thank you so much, everyone. Hi, everyone. Welcome to Waterloo. I see a lot of new faces here at campus, which is really exciting. And I kind of want to flag as well what's exciting about our time right now is that in a couple weeks we're having convocation in the space. So it's kind of easy and understanding what that looks like. I know I will not answer every question right now, and there are great experts at the booth for my team, and they can help answer any specific questions to fees, how to pay, any other details. So first off the bat, we have our entrance scholarships. So on your offer letter, you may have been offered an entrance grid scholarship. What I encourage students to do right now, I know there's a lot of worry about, can I apply for scholarships right now? Laurier doesn't have any scholarships that are open right now. We had 3 competitive awards that were open and due earlier this month. There are no other applications required. You can lose it if your admissions average decreases, and it's based on the grades following the semester. So finish strong. That's your #1 priority right now. And what about other scholarship opportunities? So at Laurier, as Heather went into great detail about how important registration is, after registration, we open up our general profile. So this is a scholarship profile or a long questionnaire that you'll populate and fill out on our student portal for us. So it'll take you about 45 minutes. You'll sit down, tell us a lot about yourself. It'll open in August, close in about October, and we're issuing scholarships all through October, all the way to April. So that's your opportunity to be eligible for any of our scholarships that are competitive. So I encourage students to fill it out every year. Your profile will look different. Those 700 scholarships are not just for first year students, they're for our whole student body. So we encourage students to fill this out every year because you get new experiences, you're in a different year of your program, and that's a great opportunity for you to be eligible for new and different awards. Next, we have our external opportunities. So often folks are like, where else can I find scholarships? A very common question we have this time of year. ScholarshipsCanada.com is like a Google for scholarships. All these external awards will funnel through the search engine, and I encourage students to take a look. Iconic is a great job or great opportunity, or talk to your employer, where your parents work, where you may work. There are scholarship opportunities often through those folks. And that you're well supported throughout your journey. So we hope that you experience that over the course of your day with us today. I hope that you stay as dry as you can. Like I said, keep your eyes open and don't be afraid to ask anybody in Laurier gear any questions you may have. We are here to help. Okay? That wraps it up. Thank you very much, everyone. And enjoy the rest of your day. वाटरलू कैंपस लॉरियर का सबसे बड़ा कैंपस है जहां 17,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैंपस कॉम्पैक्ट है, जिसकी वजह से क्लासेस, रेजिडेंस और स्टूडेंट्स फैसिलिटीज़ एक दूसरे के बहुत करीब हैं।
आप देख सकते हैं कि कैंपस मॉडर्न बिल्डिंग, ग्रीन स्पेसेस और स्टूडेंट्स फ्रेंडली एनवायरनमेंट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। हम सब ने यहाँ पे पहले अपनी इन्फॉर्मेशंस ली, अपने अपने क्वेश्चंस जो जहन में चल रहे थे वो किए सब, और उसके बाद हम लोग ऊपर चले गए। हमने जाके फिर वहाँ पे जो है ना सब ये कैंपस का हमने टूर किया। यहाँ विज़िटर्स क्लासरूम टूर्स कर सकते हैं, रेजिडेंस रूम्स देख सकते हैं, प्रोफेसर्स के रूम्स वगैरह भी यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर, और एडमिशन और स्कॉलरशिप, एक्सपर्ट्स के सवालात सब आपको जवाब वहीं पे मिल सकते हैं। आप ये कर सकते हैं जो आपको मालूमात आपको आपके जहन में कुछ भी क्वेश्चंस चल रहे होते हैं वो सब आप यहाँ से पूछ सकते हैं। स्टूडेंट सर्विसेज और क्लब के बारे में मालूमात भी हासिल की जा सकती हैं यहाँ पे। अब हम लोग ऊपर के फ्लोर पे आ चुके हैं, चलें आ जाए मिल के हम लोग यहाँ पे जो है ना इसका टूर करते हैं। ये देखें, ये ग्लास डोर वाले लेफ़्ट साइड पे हमारे ये सब स्टडी रूम्स दिए गए हैं, और ये सामने आपको देखें ये सब प्रोफेसर्स के रूम हैं और ऑफिसेज हैं उनके, और यहाँ पे बैठ के अपना लेक्चर रेडी करते होंगे। तो चलें और हम चल के देखते हैं। वाटरलू शहर जैसा कि ख़ुद भी बहुत खूबसूरत है, इसी तरह से वाटरलू यूनिवर्सिटी को भी बहुत ही खूबसूरत अंदाज से बनाया गया है। ये यूनिवर्सिटी का कैफ़े है, यहाँ के आप चाय पिएं, एंजॉय करें विद फ्रेंड्स और फिर से किक स्टार्ट लें। ये देखें, ये राइट साइड पे जितने भी कैबन्स बने हुए हैं ये सब जो है ना दिखाया गया है। यहाँ पे बैठ के लंच भी कर सकते हैं, स्टडी करना चाहें स्टडी भी कर सकते हैं। इधर से भी ऊपर जा सकते हो जुनेद, यू वांट गो अप? जुनेद की क्लासेस कहाँ पे होंगे? नहीं, सेम ही है सारी ऐसे। स्टडी रूम होगा, मे बी
ये देखें इसी तरह से सेम 3-4 फ्लोर्स ऊपर दिए गए हैं। वहाँ लाइब्रेरी, स्टडी रूम्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो भी आप स्टडी करते हैं उसी तरह से जो है ना ऊपर सब रूम्स और प्रोफेसर्स के रूम्स भी दिए गए। तो कंप्यूटर रूम्स अलग से और ये सब कुछ ऊपर था। तो इसलिए जो है ना ये आप लोग अगर जाके देखना चाहें आप लोग विज़िट कर सकते हैं, टूर कर सकते हैं। हमने सारा इस तरह से कैंपस का टूर किया, कुछ मालूमात ली और हमने सोचा कि अब काफ़ी देर हो गई, हम सारा दिन ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे था। फिर हम लोग चले गए थे उसका रेजिडेंस एरिया का, हम लोगों ने जो है ना वहाँ का विज़िट किया। वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊँगी कि किस तरह से जो है ना यहाँ के रूम्स हैं, सिंगल बेडरूम्स हैं, उसके बाद डबल बेडरूम्स भी हैं और 4 बेडरूम्स का भी अपार्टमेंट है। तो इस तरह से सारे मैं आपको डिटेल से उसके बारे में बताऊंगी। अच्छा जी, ये देखें अब हम लोग जो है ना कैंपस से बाहर निकले हैं और रेन अभी तक हो रही है। हमने अपना अम्ब्रेला खोला और हम लोग जो है ना जा रहे हैं। बस रेन जो है ना सारा दिन आज मुसलसल होती रही है, बिल्कुल भी नहीं रुकी। और कभी जो है ना हो रही थी, बीच में थोड़ी सी लाइट हो जाती थी, लेकिन अच्छी खासी रेन हुई है आज और ठंडी बर्फ़ हवा चली हुई थी। ये साथ साथ जो बिल्डिंग्स हैं, मुझे नहीं अंदाज़ा कि ये अब ये जो है ना ये यूनिवर्सिटी की हैं या बहरहाल यहाँ पे जो है ना ली जा सकती है अकोमोडेशन भी, लेकिन इनका अपना जो रेजिडेंस इनका इन्होंने हमें टूर के लिए भेजा था कि वहाँ पे जाएं, वहाँ विज़िट कर सकते हैं। तो वहाँ हम लोग जाके जो देखा है तो वो दूसरी साइड पे था, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सब दिखाऊंगी। तो ये साथ साथ जो सारी बकाले वगैरह जो ये बने हुए हैं स्टोर्स, ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, यहाँ पे हम लोग जो है ना वो कर सकते हैं, ग्रॉसरी कर सकते हैं और बड़ी ईजीली बच्चों के लिए ना यहाँ पे सहूलियात दी गई हैं। तो चलें जनाब, अब हम लोग चल रहे हैं अपने पार्किंग लॉट की तरफ और चलते हैं। जी जनाब, हम लोग सारी डिटेल्स लेने के बाद हम लोग अब जा रहे हैं वापस। और यहाँ मैं आप लोगों के लिए ये कुछ कार्ड्स वगैरह मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ, जो डिटेल्स हमने ली और रिटर्न भी हैं इसके ऊपर। आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, सारी मालूमात ले सकते हैं। और ये QR कोड जो दिया गया है, इसको आप स्कैन करके उसके बाद उस पर भी जाके आप सारी डिटेल के साथ सब कुछ मालूमात खुद से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको वाटरलू के जो रेजिडेंस एरिया है वो सारा 1 बेडरूम, सिंगल और डबल बेडरूम, 4 बेडरूम और उनके रेंट के बारे में बताएंगे। तो चलें जनाब, मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट भी लाजमी करें कि आपको मज़ीद और क्या चीज़ इसमें अच्छी लगी और क्या बुरी लगी। तो इसके साथ ही आपके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।